Interesting. Hello? 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 Sir? Hello? 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 हेलो कर सबको आ रही है वहां पे आवाज हेलो ठीक है उधर हेलो हाँ उधर हेलो 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 उधर हेलो हेलो उधर हेलो 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 हाँ उधर you want to say more? हेलो 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 वारी सुबसा अरे ना वासने सुच बोन kan at put get capture she dice expert from क्या कैप्चर हो जाएगा तो बाकी चीज हेलो हेलो से यमा बाकी से यमा से कथा बाता हाँ ठीक है अच्छा ठीक ठीक बस चल बाकी वो साउंड कैप्चर करेगा जब माइक पे बोलेंगे ना तो स्पीकर से बोलेंगे
Yeah. ये इंस्ट्रक्शन था ना सीएच के तो
roads, barren mountain ranges, serene and sparkling streams, all embellish Ladakh landscape. With high altitude comes low oxygen concentration, making you gasp intermittently. Yet, Ladakh is truly a heaven on earth. Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India and Executive Chairperson, National Legal Services Authority, Honorable Mr. Justice Kashi Rabsar, Judge High Court of Jammu Kashmir and Ladakh, and Executive Chairperson, Legal Services Authority, Jammu Kashmir, Dr. Pawan Kotwal, Advisor to Honorable Lieutenant Governor, UT of Ladakh, Deputy Commissioner Kargil, Mr. Shrikant Balasaheb, Working Registrar Rules, High Court of Jammu Kashmir and Ladakh, Mr. Rajinder Safru, Principal District and Sessions Judge Kargil, Malik Shabir Ahmed, Member Secretary Jammu Kashmir Legal Services Authority, Mr. Amit Gupta, Member Secretary Ladakh Legal Services Authority, Ms. Spencer Angmo, Colonel K.K. Venkataraman, Deputy Commander, Kargil Brigade, Mr. Mujibur Rahman, in charge, Superintendent of Police Kargil, Joint Registrar Protocol, High Court of Jammu Kashmir and Ladakh, Mr. Abdul Bari, Munsif Sanghu, President and members of Bar Association Kargil, and other respected district officers, and all the participants present here, a very good morning to all of you. This is Farika Nazir, Secretary, District Legal Services Authority, Kargil, and I truly feel honored and privileged to host today's community awareness program conducted by Ladakh Legal Services Authority and District Legal Services Authority, Kargil. The added excellence for today's awareness program is the august presence of our Honorable Chief Guest, Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India. As we have all gathered here today, let's embark on a journey of insightful dialogue, thought-provoking ideas, and an invaluable learning. But before we proceed ahead with this program, as a mark of respect for our nation and for those who have fought to protect it, let us all rise for the national anthem to be sung by the students from PM Shri Government Model High School, Lankor. Students, please. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष भाग्य गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 Thank you so much, honorable students. Now it is the time to express our sincere gratitude to the honorable guests by presentation of mementos as a token of our respect. May I please request Principal District and Sessions Judge Kargil, Mr. Malik Shabir Ahmed, to come to the stage and present memento to Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, the Supreme Court of India and Executive Chairperson, National Legal Services Authority.
Right now, right now. May I now please request Member Secretary, the Dark Legal Services Authority, Ms. Princess Anmo, to come to the stage and present memento to Honorable Mr. Justice Kashi Rabsan, Judge High Court of Jammu Kashmir and Ladakh. May I now request Deputy Commissioner Kargil, Mr. Srikant Balasaheb, to come to the stage and present memento to Dr. Pawan Kotwal, Advisor to Honorable Lieutenant Governor, UT of Ladakh. Thank you so much, sir. Now I request our technical team to play audio visuals of NASA theme song. Light still, please. Era वही सुनाना चाहेगा और न्यायालय खुद चलकर सवालों कर आएगा वही मुफ्त एवं सक्षम पुलिस सहायता के लिए प्रतिबद्ध सेवा प्राधिकरण राज न्याय सबके लिए Now, to welcome our honorable guests, may I please request Dr. Pawan Kotwal, Advisor to Honorable Lieutenant Governor of UT of Ladakh, to come to the dais and deliver the welcome address. So, please. Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge, Supreme Court of India, and the Executive Chairman, National Legal Services Authority, Honorable Mr. Justice Tashi Rabsan, Judge, High Court of Jammu, Kashmir, and Ladakh, and the Executive Chairman of the State Legal Services Authority, members from the judiciary, from the army, from the advocate fraternity, ladies and gentlemen, and dear children. It's my proud privilege, Honorable Justice
Sanjeev Khanna ji, to welcome you in Ladakh, in the district Kargil. As mentioned by the compare that Ladakh is a land of high mountains and high mountain passes. The beauty, the natural beauty is very stark and magnificent. In fact, it puts you in awe and also intimidates you. But the people of Ladakh from Kargil and Leh also belong to a warrior class. They are true patriots and they have been protecting the borders of the country with dedication and devotion. Today's community awareness program is on a very important subject of the equal justice and right of legal aid. In fact, our constitution, Article 21, lays down that no person should be deprived of his life or of his civil liberty except in accordance with the procedure established by law, which means that your natural right of life, liberty, property is protected by the Constitution. But when we see the system we have adopted, the legal system that we have adopted, whenever our liberty or our life is in danger, we seek recourse to the courts where there are two parties. The one which wants you to take your liberty, and you who want to defend it because it is guaranteed in the Constitution. So, people with means can do that. But what about the weaker sections who cannot engage the lawyers who can defend them in the court of law? And, my lordship, this is where the directive principles of state policy come into being. And the section 39A of the DPSP was introduced, which guaranteed that all the citizens of the nation, whether they are rich, poor, haves or have nots, would have somebody to defend their person and their liberty in the courts of law. And then we have the Legal Service Authority Act, the NLSA, SLSAs, and the DLSAs. We here in Ladakh, under the able guidance of the Executive Chairman, Mr. Justice Tashi Rabstan, have also set up under your overall guardianship at the national level a very robust legal services authority in Ladakh. Our paralegal volunteers are motivated and they ensure that the weaker section, the poor and the deprived, the women, they get access to justice. And we are extremely delighted and we are extremely grateful that you personally have taken care to visit us and to chair this very important community awareness program. Because the biggest challenge is you have rights enshrined in the Constitution. You have people who are genuinely interested in protecting them. But it all starts when you are aware of them. If the people belonging to weaker sections are aware that they have rights, are aware that there is something called DLSA, are aware that there are some people who are paralegal volunteers, only then they would be able to assert their rights. Only then they will be able to access justice. So, such events where we tell people
that these are our rights, these are your rights, these are guaranteed in the Constitution. Nobody can take them away. They are natural rights, sacred, can't be touched. Only when the people are aware of their rights, only then it can be ensured that they will be protected. So, once again, I'm extremely thankful to you on behalf of the administration of the UT of Ladakh. I extend my heartiest welcome to you and also to all the audience who are present here. And I'm very sure that with this community awareness program, they will benefit a lot, and this will go a long way in ensuring equal justice through the medium of free legal aid to the people of Ladakh. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir. Born on 10th of April 1963 at Village Kyurbucha, District Leh, Ladakh, Honorable Mr. Justice Tashi Rabstan, the son of the soil and the pillar of support for all the judicial officers of both the Union territories of Jammu, Kashmir, and Ladakh. Your Lordship, saying thank you is not enough to express how grateful we are for your continuous support and able guidance over the time. It's my honor and privilege to invite to the dais Honorable Mr. Justice Tashi Rabstan, Judge High Court of Jammu, Kashmir and Ladakh, to deliver the keynote address. Thank you very much, Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Senior Most Judge of the Supreme Court of India, and Executive Chairman NALSA, and next Chief Justice of India, Mr. Pawandev Kotwal, IAS Advisor to the Lieutenant Governor UT of Ladakh, Principal and District Judge Kargil, Principal and District Judge Leh, Deputy Commissioner, Member Secretary to J&K Legal Services Authority, Register Rules, Joint Register Protocol, SSP, Kargil, and all along with his team of officers of District Kargil, Army officers, advocates, paralegal volunteers, numberdars, and civil societies members, Anganwadi workers, ladies and gentlemen. Today, we are assembled here to one day community awareness program, and all of the citizens of the Kargil districts are so lucky that today Honorable Justice Sanjeev Khanna, Senior Most Judge of the Supreme Court of India, is within you. And I would like to thanks to Justice Khanna for choosing Kargil. And also I'd like to thanks for sparing a valuable time for coming over here to hear and to chair the one day awareness programs. So I'll seek permission from the chair because since majority of the audience are from village, though I have a
written speech long regarding the legal awareness. However, I would like to speak in Ladakhi, so I could convey them the benefits about the schemes of the Legal Services Authority and also their roles if the chair permits. Thank you. Rahmala Jule, Salam, Adab, during sharing inspiring Nija Sangmanampo, Tukches Moka, Tukches Inna Halvina, and during Nija Sama Samaraki Ma Sode Sonam Chanjin of Samarak, Pura Hindustan Inang Ne, during Summe Sang Senior Judge Sahib Nata Dunla, Kargil Sketches for Nija Sama Sode Sonam Sora, Kongun Torel Zai Shir Nestina, Pura Hindustani Supreme Court Chief Justice of India Gusejino. Honguni Kuranguni personal interest answer Samas Hanlang Aja Mola Raki being a Kargil Supas, Changinda, Kargil Sonse, legal services, Ata legal services, Pantos Munchido, Mimas Malagazo Pantosondo, Nispa, Nijasame Rolchi, Tesamati wishes up Tefang Karila Changinda, Mola the Defa Nijasaman Shetna Lagdapchik, Tony Kargil Damches Pasalaza. And yet, give Tonta Pozanang ata Nija Sangme Samitu Dri ka Supreme Court Judge, High Court Judge, District Judge Sangma Nija Sangme Dunla Chia Yonsene Samato. Rengaja Yonche se Tonta po Korang Kanuni Nangri Johnson, Kabena Chixtong Bukya Gechu Captain na Parliament na Act pass on Kya Cover Legal Services Authority Act Janjisang. Te Nangjin Tene inches po Naja funding bu chano po Juis. लेकिन ई लास्ट को मिमांस लागजो पंतोस तांदो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जरखान बो एबे ना सुमिना असगो सत्य छेन्मे तोंता चिउत क्या जना का तो पूरा नेशनल फिया ngata ngena zarano की नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो बेस्ट तो क्या का भी चेयरमैन बो सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज पे जोनो देश तिना राणा स्टेट इन आनो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इन जिसा तेवे ना तना हाई कोर्ट राणा स्टेट हाई कोर्ट सीनियर बे क्लियर जोनो then district sangmana ayot kya hai district na kya te district judge po district level tene koni chairman gurano galsa te was on district legal services authority ye kanuni 1960 87 kanuni तहत दिरिंगाजा सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ना तेंगाजे डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी कहीं समिदुला योंस्तारो even achang aje case na pochang reduk met kya you sleep sleep meja sangma legal services authority zerkhani te nangje na scheme buchidu te scheme na pantok chidu te sangma shache si pe ngeja awareness chuche te sangma ngeja how go chusis pa dring yong sano dring isu busy juk sano schedule ma busy ot kya khon tena na tus pin dring sketches po inge mangpo ji miju tenete in nang ngeja duspa jizun Naje chief क्या सना district level का district legal services authority ना याना chairman वो district judge वानो इतने वायंग में secretary वानो ते secretary वो sub judge CGM वो मजे secretary वानो ते वो district level का सोचता हूँ ते मन मजे तालुकात level ना ता तहसील level का ज़मीन रंग ता दूसरे दिन का ते level का खुरा होत क्या का मुंसुपो तेरे होत क्या कोच chairman की वानो ते संगमा याना लेकिन मजे पेरा legal volunteers in जैसा मजे Ini yul gunla, yul sangmala, hagu chukse sipya, kone rok chukse sipya ngeja, I scheme book kazo pantok na nyancha zakani pe ngaje gosto kya ngeje,
Yul sangmena yut kya tahsil level kya district level kya tewa kongon sangma skoche se tonta ko no kinge je ngeja su karlo spena ka to su ka to senior citizen indo ka su ka to nyera leki tena na retire songkan ji odlo ngeja ka te pension paper chu nyana mer na ka to ration card chu nyana mer na ka to aadhar card chu nyana mer na ka to passport chu nyana mer na ka to chiji chu nyana mer na ka to tene te lingaje peral PLV session ngaje short na khongun ngeja ka yongste ngeje tene ngeja tena roxwan kazuga application forms content ka office na chago sano if yang aje nirale kiti government is constitution ina man scheme samudot ke article 39A zerkan bina skosto ke kibe ka migunla ospa chitung korang une ospa nasi thok miru inches po ngaja chang government is sat tanga chochwa mano ngaja nirale kina government club chamno ngaja ju mi so shiongo lekin skoste government skoste no Pena chola ngeje ngira ligi chiut kersana ka ngata ladas lang especially ladas lang ngira ngata daksa mana tourism ang poji ono deno ngata Kargil ay no ngata le no mana pura daksa ngata regular cross cross mana policies pera ta ta ngeso ladas la pate bena ngeje mimans la citizen gun la ngeje asili yulpa gun la ngata ladas to rijal jino ngata mala ki mana azuk shika no so ale cheda ngata pura chi sang natural je ka no real ji ngati fiat ngati chu kurang kangri ka depend sano kangas po kazo ono sanar gun lang atang khaji tanga ka to kangas ya sano diring supa ngatang ai jing manok chui kangri chui ka atang khasas kushu chuli chuano kangri chui ka sas badano kangri chui ka ta nge zeshes po tourist gun kan ngata noskel yon me chukse noksan cha me chukse sipya ngeja sangme ka ma ziba shante gotya e zimar ko chino zana ka to kachiut ka zana ka to dasang atang yaran lekin mangpo ji chalak pilok na yoano benefia eba ngeja sangme komuni chizano mina advertisement tano kyala yo diu man azugun ah ai puin gyalan zerano lekin tebe na mangpo ji ngata tena yampo minda zurmo kyongano te sangma ngeja bene malta ala tegun na ngata ngati ri yulin hesaba ngati ri district hesaba ngati ri mohole hesaba te ngata sangma hawo go sanok ki kaw noskal tangkanen kaw kantok sanduk takan bo ngata noskal tangkan bo na tewa ngata sabishik zula tango sanok tewa ngata temshik encourage go samano ta ngata phone is este chiong du zana kato samma plastic mo ko yono chi bottle kurte khwano chips na yono tel phan chano karon sang ngata salam na tono osano teun ngata mangpur noskal utya ta ngata teu ekdam se penne mala noskal ngata thwa mano tu ringmuji ten dug na kato te noskal be jakshi ngata chi chano zana kato ngata global warming ispera tang seno zgun la khami wapshes yerla mina mosum ngata ngata se no ko ba duchi yaru man yong no zer dupa te sangma chi asare no zana silbo ta ngata rais nature nambo chira chuche speaker yong steno argun misharches yerla yar misharches te sangma noksan bote na yong steno te fia ngata rasa samshigas koreans pa yon igun benek ngata pantok joano lekin ngata te sambotang gosang te pene wata se te kan sam noskal te ngata check josan pantok sangot kya noskal not kya lekin samme sangla ngata kaltes ka to khama ber na ka to fyonches mano chuma ona ka to ngata te thore sakyat bache se azu met kya stontok yo amano ngata chuli gunla ata kushu gunla minda busik tabdu hanje mana ata sor masor kya tebe tebe gumsando pilok na ngata kyongano khazasi azu tebe na lut ngata zuzma angchuano tena po mina pusing yang po orang ngati khazas ko ding supa ngana Kargil na ngata mangpo sorte no cutting ma mashuri no eje cutting sang ma yana mental dama bab sama no mento bab na mento ko
Tusmela buchaches, cutting galamions, music touches. Te sangma pilok na yung sonok chang kurang Kargil kuri nang na Ladakh kuri nang kuwa te sangma skiste mano. Chezana kato, otin yampo yuano. Ta pilok na chi sangatan kazashi tukshi nasiri kyona kato te yampo jarte mano. Nija recently nirala ki nija nasuli na sorche do. Himachala khachul ne kushi nasiri mana stongta na kesya. Penefia. लेकिन हिमाचल पहुंचने के ना यो मचूस सकते हो तेज ऐसे सोक्की पे यो ना का तो यूनानन मजा पता में तंतन लेकिन चिपा तो नदबू में दा है तो जार तो ना का तो मजे से का बाप सब तंग मजे सका तो मजे जी हम उसका ये sama ngatang sama sambatan ko cuma kasan no pena zo ngatang consumer ngatang ira leki mangpo je jalak le banok pilok na pantos galtus ngatang tanga no atam din su ko duksa no papa tupe kam duksa no ngatang ta din chi chayusana pilok kharji mangpo khwano ya chi sama mede jo seyo mano 상마 치규르드잖아 미나민다 서버도 롬포차로 토스멜라주 차로 라스 조체젓 메트야 당드링 상마 가리나 둘라노 상마 모바일 탐스 두와노 송바사 액티비티즈 메트파 상아테 주스코나테 상마 캬 두와노 that availability to legal services karu ata yana legal services yata goslo mete samda sam ye zerkan sola rara national level ka state level ka district level ka yo deno the excess of legal aid excess po kata kazu te phantos ne yo zerkan bo sanga se ngira liki taluka na district level na ata yana liki rara state na no main bonus chichi impact of legal services on the community ngeja daksang ye zerkan sola community ka ive impact ko ive azupo asar bo ngata gaushi channel zerkan bo ngata daksang nai tantan joses ife ngeja mimangsi ka mane azushika zimawar ma chenmo jiotya shkoda daksami nge zerkani azukpo nge daksami immediate pures na po related chokhan bo sangata thong not kan ngatiri ka chen bab se not kan ta ngo se not kan bo te nge shaden ya phantok song era lekin ma mangko jot ya phantok si azar na zana ka to government de kon scheme ko to mo scheme ina era leki daksang ata era daksang e ngaji pera legal volunteer jo deno te kan era district era ngaji secretary ka legal services le district judge ko korang korang chairman no nija sangma chi daksang e kan so kalas bazo jodo saltes ka to jaga chi era leki mana gadmoji era leki ma zurme gyor na ka to kha ha go men na ka to ka doctor bi ka session ka doctor ko sahi no zakan bo te ngaji pera legal volunteers go ni ja dano chitong si ngeja yang mana shuguji madu ba do ya su kalla kaltes ka to litigation na yot na ka to case ichha na ka to ke wo vakil jo jasi pe pene ngeja men na ka to ngaji daksa me soju chokna government is chokna ngaji daksa me nera liki defense council legal council ngaji board to kya te uni nera liki ngeje case ko chon na chano gyala sang gyala senior na gyala ngaji nera liki dam so kya te be nera liki government ke khilaf ang case chuano Basic some scheme because of the more just pole. Government is penatan te ngada defense legal aid council korang on government gabala nga case chesi pele. Kata criminal case na ka to government gabal chaso pale. Scheme umar debo no te feng ngeje wala ki phantok nan gushes ngeje ma khachane no fyodale. Te sombasang I legal services authority ngiran ki dasa PLU na nga tana asin ki ngeje sangma yulu na fyode I phantos gun Even Yajichi rolling, there's some shot washes, some Makasanino, then a public dula yono, public as Samusano. Then a community na looking at the Sangatiri culture with an culture, rich heritage in Nazangatan in Aliki Kargilina, wealthy in Aliki. Is up Salon Sali Purana Hatan culture Garale. There's some Yanaliki Sponskop Tansipia, switching, Hatan Machuna Catapilona Children. Te sangme culture ngeja ka to wisdom share na ka to I through ata te oncho ngenche jino. Sada. This was man mampo jot kya ngena leki ta te bina ganen sa mampo jot kya. So
बाकी detail ngira lekin ata national chairman ek askyo de no kon detail ngira sama panto detail no nganya ja sama tu nduk je no yang skari no ngayon duano tene nge yang stingjuk pikat sama mana juju salam zara ki I scheme bo nija sama panto scheme na chi panto jote nana zat nija hago chus ngaje yulu la ngaje decision la ngaje gestation yulu na nija sama yulu na bari bari se kon so detail na po hago chuano scheme bo jin Antuk nanti sa tingin siya ngiti daksa siya niya PLB joto nok tesang mangyana ni kinsa team tu aja. Ini tu mang position so I think I taken a lot of time. I'm sorry my lord. So because I thought I could better convey the schemes about the schemes in the language, which also I just wanted to remind myself whether I'll still uh, remember the language or not. So I'll check myself also. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Lordship. There's an air of expectancy as we wait for profound revelations, inspiring stories, and impactful wisdom. Accepting our invitation to share their expertise and vision, it's now my honor and privilege to invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India, and Executive Chairperson, National Legal Services Authority, to the dais to illuminate our mind and inspire our heart. Lordship. Mr. Justice Tashi Raptan, Judge, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Executive Chairperson of the JK Legal Services Authority, Dr. Pavan Kotwal, Advisor to the Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, members and officers from the district administration, district judiciary, Colonel Venkataraman representing the army, and above all, the residents of Ladakh and citizens of Ladakh, paralegal volunteers, and who are the eyes, ears, arms, legs of the legal aid movement which we have, the panel lawyers and the legal defense counsel. Adab, Julian, and Namaste. I come here with not a desire to sermonize or preach. I come here with the intent of learning and knowing from the citizens of Ladakh about their problems, issues. Yesterday, when we drove from Srinagar over here, someone remarked, "This is such a paradise and heaven on earth." And Justice Tashi Rabdan corrected him, the living conditions are very harsh. We have in the Constitution Article 14, 21, 20, 22, and then the Directive Principles 38, 39A. We have a number of schemes. There are 13 schemes formed by the NALSA, which we are implementing. I'll just briefly refer to them. There are a number of schemes by both the center, and the union territories. One thing is having all these schemes and articles and statutes in place. What is more important from the governance point of view is awareness, access, and enforcement. We often understand and look at
NALSA as only providing defense counsels to the accused. That is a part of our work. When I look at Ladakh, I find there are about 1366 cases, out of which 667 are criminal cases. There are working strength of 9 judges out of sanction strength of 15, which makes it 151 cases per judge, which is perhaps one of the lowest in the country. There are only 30 prisoners, out of which 26 are under trials. So these figures reveal that, really speaking, this part of the NALSA is taken very well care of. So I'll be in the end referring to my panel lawyers and the LDCs also to ascertain the feedback from them. And I'll be very frank, after a brief introduction, I'll be sitting down and interacting. I want an interactive session. I want to know about the issues and problems. The other part which NALSA does is with regard to awareness, access, and enforcement, help in enforcement. This means we have to provide legal assistance and help and advice in case to case basis. So it's this part which is of extreme importance as far as Ladakh is concerned. Ladakh enjoys perhaps a unique position. It's the largest union territory by area and the smallest, or the, if we least populated, because the population is just 2.7 lakhs, 2.74 lakhs. What makes it unique also is there are two really bigger towns or cities, Leh and Kargil, but we have about 239 villages. So the challenge before us is, how do we access the people living in these 239 villages? As I said, our backbone are the paralegal volunteers. In addition to these paralegal volunteers, we have one legal services committee, district legal services committees, and 5 taluk legal services committees. We have about 34 paralegal volunteers, which number I felt was a little less when we look at the number of villages we have, 39. For them to be able to interact and go to the villages will be one of the issues. I personally believe that at least paralegal volunteers must visit each village once, if not twice a month, depending upon the size of the village, in the sense, what is the population of the village. I like to have feedback from both the paralegal volunteers on this, as well as the members who are present the village from the different villages. This will help us streamline. We have over the years gone in for online applications with great advantage and benefit. Cashless transfers, etc., have been of great advantage and benefit. Everybody is aware of it. Then there also is a cause of concern is the digital divide, in the sense digital illiteracy is still prevalent. How much are the paralegal volunteers able to fulfill that gap? I'd like to know from the paralegal volunteers. I'll also like the members from the villages to be able to answer and help us on that. We had in the last year organized about 77 legal awareness programs in Ladakh, and about 3,328 members from the general public benefited from that. What is of little concern was
we have one helpline number, All India PAN, one helpline number for anybody seeking legal aid, which is 1500 we did not get a single phone call from Ladakh on this number. We want uh, we want people to be able to have access. The advantage of this number, we are now evolving frequently asked questions and answers. Till you call up, we will not get those details. Number two, we would like to ultimately be able to answer you in your local language, the language which you speak. We are evolving a AI system by which you will be able to the our system will itself identify the language and accordingly put you to. We have a fairly robust system in that even when the person sitting on the other side is not able to answer your question, they'll put you to a lawyer who will be able to help you and answer that question. Yesterday, talking with this Raspina, and I was told about we have these Buddhist mediation committees in the villages. I like to be I like to be informed about them, how they function, how they perform, what is the nature of disputes being resolved in those. We have over the years evolved what is called modern system of mediation. We want this to be spread out. We perhaps believe that we are all inborn mediators. We can settle anything. Mediation is as technical, as complicated as court adjudication. But the parameters involved are entirely different. A lawyer or an advocate is argumentative. A judge is a decision maker and adjudicator. A mediator is neither argumentative, neither a decision maker. He doesn't force his decision on the parties. He maintains absolute confidentiality. He will not tell the party you are wrong. He'll be a good listener and understand why the party is taking a particular stand. Can I give one example? In Delhi High Court, there was a dispute between two brothers. One of the brothers was almost like a father because the children lost their parents at a very early age. After 40 years or 50 years of joint business, suddenly they started fighting, and the fight had continued for almost a decade in the courts. The matter was referred to mediation. The mediator tried to go into the cause of the fight. The cause of the fight was not money. The cause of the fight was not business. The cause of the fight was emotions. The elder brother said, I brought him up. I had spent the entire money. Now he wants to settle. I've got no difficulty, but he must pay me 1 lakh rupees more. 50-50 divided. I've got no difficulty, but I must get 1 lakh more because I'm the elder brother. The younger brother said, I will not pay a penny more. In fact, when I had joined, our business was at this level. I, by my hard work, brought the business at this level. You have the figures before you. How on earth can he demand 1 lakh more? This is an insult to my hard work. The mediator interacted with both of them, and then he showed his ingenuity. He said, ask the elder brother, will you be satisfied if if your younger brother comes to you and hugs you and, acknowledges your contribution? The elder brother said yes. The younger brother immediately, on being spoken to, said, I'll go beyond that. I'll even touch his feet. So when that happened, the reaction was the whole disputes got settled.
Now, this type of settlement is not possible in the court. But what is important is, and we forget often, is the mediators must be free from bias and prejudice. That's something which we are often blind to. We are often blind to our own failings because we feel that we are perfect. So, this is one aspect of mediation which we want to go into. We'll be introducing online mediation course, which will be available by, I think, by July. Uh, Hopefully, that will help people to understand what is modern mediation and how we are evolving. I can give you figures. 36 lakh cases were referred to mediation in India, pan India, and we have resolved about 11 lakh cases by mediation. And this is a figure up till December 2022. We have to move forward in that direction. It's better, at least it will be very helpful and better, at least as far as village and small little disputes are concerned. Other thing which I want to hear from you is with regard to the Lok Adalats. Lok Adalats, the word Lok Adalats or People's Court brings mind. I've seen in so many villages, everybody is aware of what is Lok Adalats, what they're doing. According to me, Lok Adalats is a form of mediation. Is a form of mediation because there again is only by settlement it happens. There's a difference between mediation and conciliation. Conciliation, the independent person plays a more active role. He's far more intrusive and not a silent spectator. Lok Adalats probably will fall in the category of conciliation, but conciliation and our mediation have interconnected. So I like that to be learned. Uh, about the schemes, I like the PLBs. In particular, as far as Ladakh is concerned, we have schemes for senior citizens. We have scheme for tribal rights. We have schemes for workers in unorganized sector. We have schemes for children and also for drug addiction, and abuse, etc. And we have schemes for access to schemes itself in form of poverty alleviation. With this, I'll conclude my small introduction from the dais, and with the permission of everybody, I like to sit down, pass on the mic to the people who have come all the way from the villages to point out what they feel are the issues and what they expect from legal services authorities. Thank you. Yeah. Yes. Dasa Justice Sanjeev Khanna sahibi tangata mimans la molara nija daksa chitung nija hamawa yutna ka to nija I phantok sun chino ko ti ti goshe zak sam na ka to ata daksa skyo de no number da yelun ko ni nija ante no if I please samay kon la tia zak kon la tene kaswa phantok sun nen goshe jino e sama tia zak aje mic nija sama duna la chun son bazan juju suji gi na tia zat somale ichi no zakam do tia zat kazu ngaji ka leba no zakam do tia zat neje yulina PLV skyo do miro te on tia zat mola zat neje moka thwa man bar bar skyo da maskyo le tia zat juju samle bole tuje se suji gi tia sang la rang rang kanas kyo ten rang mingo yang chin te on mola zade ole ole ole
हमारे चिकन विलेज का पैरालीगल मैनेजर, बिल्कुल मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पैरालीगल मैनेजर है कितना है, कौन है। तो इसके बारे में थोड़ा तफसील से हमें पता चलना चाहिए सर लोगों को कि फलाना पर्सन जो है पैरालीगल मैनेजर है, तब जाके हम उसके साथ रब्ता तय कर सकते हैं। तो मेरा समझ यही है सर। थैंक यू सर। सर Mira, igual, fuimos a Chicken, Melina, Swing, Kanna side, just Kanna side, Chicken, Melina, ये किनसे सीले जाना पे वो ना स्टोर कराना तो होते क्रिएटिव स्विच दिलाना जो ना था तो स्लिप वही इमावस वही नीचे सूजी दिलाना तो दुनिया ना पे वो नीचे sama acceptance of cosa per mi sama che na je ini chila za kambo ya pe shokan ji metanje juni la shokan ji juni la zeshe to mala ko ngira le ke si mema spontos la shokan ji dedu shimi ne ja ni na yo ta kato pero na je ni ja so nya ji no es kurs para pala na kan kurs para pala es plan na je training ji ta na kurs la ko Metteva meglio forza, la forza non tanto di sistema non la maggiore, poi bene tanto per fare così. Devo una fare 예전에 일내에 보시상 같은 것들은 김치스이나 용나로 수리나 용나로 스리 다사마타 유지가 꼭 버티는 마우스 제가 같은 버티스 포나 게사 페리아 내가 일내나 가면 이차 세컨드 유만 디아노 las no tocan funciona digamos básica dinamizador number da dinamizador digamos exclusive dinamizador digamos el tema cuántos somos para el digamos presna no para ir no basta era ayudar en ese que ayuda a mantenerlo ये देखना कौन ऐसा किसी ने कैसे जाएगा निश्चित ना ये ना करो टेलीफोन नंबर दिया भगवान के समय नंबर वाले कान चला ये टेलीफोन नंबर जो को सम आता है का सा कम्युनिकेशन ऑफ है वो ते के लिए जाओ क्वेश्चन इसका That's opinion, massacre for the consistent with classic defense gesticular positions district judge मैं उस घटना की समझता हूँ घटना की समझता हूँ मैं शक्ल से विरोध करता हूँ और ना में बीमार में एक 66 साल का एक लड़का हूँ तो वेरी गुड लड़के से आ गया शाखा चिकन डिस्ट्रिक्ट कारगिल हेडक्वार्टर से 62-63 किलोमीटर या 65 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ एक एसडीएम भी है, लेकिन जहाँ जस्टिस होना चाहिए था वहाँ एक मुंशी साहब नहीं है, मेरा कुछ ये है। एक छोटी सी हमारे साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने वाले या लेडीज होगा या जेंट्स होगा, चिकन पेपर की मैं बता के कहा उससे मेरा कोई वादा नहीं है। दिल्ली से भी सीनियर जज साहब तशरीफ लाए हैं। जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख का जनाब
काशी दर्शन साहब की तस्वीर लाए हैं। तो हमारा कंपेयर विलेज भी होता है विलेज से सरकार से दूर तक तो शकरचिकन को इतना जुल्म क्यों है अदालत की आदिलाना वजह से क्योंकि वहाँ एक मुल्क वैसे तो होना चाहिए था अदालत का कोई मतलब सिस्टम वहाँ सब डिवीजन है तो पहले तो इस तरह भी हुआ करता था मैं बंदा खुद का जवान सब जो है वो मेरा या कोर्ट काउंसिल निकाल सकते दूसरे ये माता प्लस सर्विस प्रोसेस पूरा घूमने लगा Selam basın abi. Selam Zeymani işte şimdiden bir şeyle isso é ele australiano não sabe se não sabe ele não se formar em dar para todo mundo como não viu मतलब तो वीजा की जो कोशिश ना प्रेशर तो कोशिश ना के सवाल किए जा रहे हैं और भी बिंदु कुमार जो बहुत सारी सोच रही है हमारे लिए सोच रही है वही मैं सोच रहा था कि ये को डालने के लिए चीजें हैं ये क्योंकि लीगल सर्विस एक छोटा सा चीज है लेकिन एक म्यूजिक टेस्ट होना चाहिए वहां भी एक जीरो को यूनिवर्सल शायद नेशनल है सोचो अभी है अभी हमारे पूरा अपनी तरफ करने वाली है हमने ये एक सब कुछ दुनिया में यूनिवर्सल शायद नोट कर ली नेक्स्ट क्वेश्चन कमोन आर्टिस्ट वाला कमोन slide पिछला काटो उदी ना से शेयर का तो लगा सकते हैं लेकिन स्विच रखूंगा सर इसका नाम ना सीधे सबसे पहले तो मैं जो तरतीब आए हमारे हमारे चीफ जस्टिस और बाकी हमारे एडवाइजर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और हमारे नक्सलदार वेलकम करता हूँ सर हमारे करगिल में अ, हमारे तरफ से आपने दो तीन इश्यूज को ये बताया कि लीगल सर्विस यहाँ पे अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मैं सॉरी सर मैं हूँ पश्चिम गांव से बिलोंग करता हूँ मैं एक सरपंच हूँ पश्चिम गांव का मेरा नाम ईसा अली शाह है तो मैं अब को ये मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि सर मेडिसिन में अल्लाह का फजल वगैरह से आज जितने भी हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में गाँव है वो अपने मेडिसिन ही करते आ रहा है सर आज तक कि जो भी छोटे मोटे मसले हैं वो गाँव के सरपंच या नंबरदार या बाकी जो मुआजिज होते हैं वो लोग बैठ के आपस में जितने भी जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो हल करते हुए आपको अच्छा है ये बहुत अच्छा है पर मेरे को कई बार थोड़ा डर लगता है और उसमें मेरे को बताइए वहां पे बेइंसाफी तो नहीं होती ये मैं ये भी बताऊंगा सर जितने भी जो भी नंबरदार है या गांव के बुजुर्ग है या उलमा है जिसमें हमारे मौलविया इन्वॉल्व होते हैं वो अपने हिसाब से पूरा जस्टिस जो भी मतलब फैसला करते हैं वो करते हैं दो चीजें हैं मैं बोलता हूँ देखिए हम संविधान से मानते हैं कि अब संविधान के अंदर एजुकेशन का या डिसीजन का जो हक है वो जुडिशरी को दूसरा आप किसी और को उस चीज का हक नहीं है पर जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मौजूदा करके एक दूसरे की कंसेंसस विदाउट किसी को प्रेशराइज किए हुए किसी को फोर्स किए हुए एग्रीमेंट कर सकते हैं आप इसलिए मीडिएशन का मैंने थोड़ा सा बोला था
मीडिएटर का जो रोल है जो हम लोगों ने इवॉल्व किया है, अब मीडिएशन एक्ट भी बन गया है, लागू हो गया है। अभी उसको एनफोर्स प्रॉपर्ली नहीं पूरी तरह नहीं हुआ है। उसके अंदर मीडिएटर जो है वो न्यूट्रल होता है, वो पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ पार्टी को खुश करता है कि सलाह रख के एग्रीमेंट कर ले, एक समझौता कर ले। तो वो थोड़ा सा आप सबको भी जो अगर हम बनाएंगे कोर्स बड़े कहा है इनको कि वो लद्दाखी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। तो हमारा ये जो आज भाषा का स्क्रीन शॉट था मैं चाहूंगा वो भी लद्दाखी में भी ट्रांसलेट किया जाए। बहुत बढ़िया सुंदर गाना है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़। Yes. तो यही है सर, आपने जो सजेशन दिया कि इस तरह मीडिएशन का काम होता है वही हम करते हैं सर। किसी पे जोर जबरदस्ती किसी को प्रेशर लगाने के ऐसा नहीं करते हैं। हम दोनों का जो पार्टीज को कंसेस करके उनको समझा बुझा के मतलब दोनों का इससे बेनिफिट हो, दोनों को कोई ये नहीं लगे कि ये मेरा तो कमजोरी हो गया उसका जीत हो गया ऐसा फील में महसूस होने नहीं देते हैं कि ये इसको दोनों कंसेस करके इसको सुलावा मतलब ये करते हैं ताकि आप अच्छे आपका बहुत मैं ऐसे कर रहे हैं बहुत अच्छी और साथ में हम इसके साथ साथ यही फोकस करते हैं सर जो भी डिवीजन हो जो भी हो उसके लिए बात हमारे ट्रेनिंग होना चाहिए सर। जो भी हो ताकि उनको समझने के इससे भी अच्छा जो है हमारा दूसरा सर लीगल जो सर्विस आप लोगों ने बताया है लीगल सर्विस का के लोग है और हमारे यहाँ पे जितना भी है जो भी है वो आज तक इन्होंने एग्जाम देते हुए हमारे यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट है लीगल सर्विस का अथॉरिटी का वो लोग का फिर ये भी हर जगह हर फील्ड में आपकी ये विलेज में क्लियर भी आ रही है ये भी सारे हमारे गाँव में लाए भी यहाँ पर होगा सरकार द्वारा जो यहाँ भी लोग आके हमें इसका अवेयरनेस दिया करते हैं। हम ये हुआ है हम भी चाहते हैं कि इसी तरह हर ब्लॉक में हो हर हमारे पंचायत में हो ताकि इसका आगे लोगों को फायदा मिले। जो गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है वो आपके यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है कि फिजिकल पेपर में लेंगे अभी तक तो ऐसे वही इससे हम कहना चाहते हैं सर लीगल में आप लोगों ने बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें स्कीम्स दिखाए मगर उसमें अभी तक मेरे हिसाब से इतना इम्प्लीमेंट नहीं है जितना बाकी जगहों में थे क्योंकि यहाँ पर ये सर उस वजह से अवेयरनेस आप हर ब्लॉक में या हर पंचायत में करें तो हमारा बहुत फायदेमंद होगा सर। पर स्कीम है सुनने में आया था कि जो हेल्प मिल नहीं सकते उसके लिए वो दरवाजे पे ही आके उसका जो केस होगा वो सॉल्व कर सकता है या उसको फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट कर सकता है बोल रहे थे मगर अभी तक खास हमारे जितने भी लोगों हैं उनको ये बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है सर। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर जब आप यहाँ पर तस्वीर आए इसमें हमारे लोगों के लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए उसके लिए सर थैंक यू। वैसे सबसे ऊपर सबसे ऊंची विलेज से कौन आया सबसे हाईएस्ट विलेज से आपने बोलिए और कोई Lakshmi Villains from Zanskar. यस वाला सबसे सबसे दूर से कौन आया आप बोलिए फिर ये बोलो हाय 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 अरे उनको दे अरे उनको दे चलिए सर मेरा नाम है सोनम जैसे खुशियों से सर नंबर सर क्या नाम है क्या आपका अभी तक हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं चला कुछ नहीं चलता है हमारा गाँव में कुछ भी नहीं पता नहीं चलता नेटवर्क नहीं दुनिया होने की वजह से तो इसलिए आज यहाँ पे सर अभी मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है हमारा गाँव में इसका
ये मतलब ये चीज नहीं कर सकते। ये स्कीम वगैरह कुछ नहीं कर सकते अभी। जिससे भी यहाँ पे बहुत कुछ होता है जैसे किसी की 40 से करीब के और बहुत कंडक्टेड अरे तो हमारा गाँव में तो शहीद का ऐसा नहीं पता है। आपके गांव में कितने आदमी हैं कितने जने रहने हैं? सब पूरा हमारा पुराना छोटे छोटे 3 गाँव से हमारा गाँव से पूछो से वो साठ करेंगे सर 60 से 70 करेंगे सर तीनों मिला के 70 चाहिए 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर कोई पहुंचेगा आपके सर। थैंक यू सर। Ai, mas tinha uma vez aqui, ऐसा नाम हुआ मैं तो मैं ऐसा मैं तो मेरे से नाम करता हूँ उनसे हमारे शुरू इलाके में रात से दाएं बसते हैं मगर क्या करें फैसिलिटी हमारे स्कूल में बहुत सारे मार्ग से बहुत सारे मार्ग साथ भी तो इस बिना पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आप सभी को और आपके हमरा आपके प्रोत्साह कराम यहाँ पे तशरीफ आवारी में हंसते हैं जैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं खुद अपने टूटे फूटे कपड़ों पे पूरा न जमाया कि आप स्टेज पे आके हमें बाविकत को आपने आप लोगों का हौसला दिया आपका बहुत बहुत मशहूर ममनून है तो हम हमारे में हमारा जो राकेश जिसमें थे ठीक है राकेश में बहुत सारे टूरिज्म के तौर पे हमारे अभी से दूर हमारे गाँव बहुत कुछ की गाँव है तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी है और हमने बहुत सारे ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो विभाग भी था और उसके हमारे तो वो आपने ये हमें हमारे साथ में एक हमारा मुझसे है हमारा लीगल स्टडी का मैं अपने काम के लिए हम आते हैं शाम को शाम तो पानी का 35 किलोमीटर है दूर है इनमें का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे आने के लिए अभी तो चलो फिर गाड़ियाँ आ जाते हैं कभी कभार स्नोफॉल हो जाता है तो हम ये बहुत मुश्किल हो जाता है वक्त पे हमें साथ में नहीं पहुँच पाते हैं तो इसलिए हमारे वहाँ पे भी अगर मुझसे अगर दिया जाए तो मैं सब कहने के लिए तुरंत बाद ये भी था सिलेंडर नहीं काम किया है मैंने बात के लिए मशहूर हूँ तो हमारे हाई ट्रांसलेशन के लिए हमारे बिना पूछे कंजन हमारे प्लेन से और एक मिनट हमें को बताइए आपने कितने के लिए पीएलबीज आए हैं आप पर करें बिल्कुल जो हमारे आप का हमें पीएलबी का हमें आप तक नाम नहीं सुना आज आपने बताया हमें सर आप मेरे को बताइए कि कितने विलेजेस में पीएलबी सभी आए हैं आप ऊपर करें नहीं आए सर जनाब राकेश जैसे कि आप सुना Kailangan yun na sa muna na saan si PLB kasi na yung local sa nilakal mo na. Respect. Sri Bakuri. Siya po yung local yan. Hindi pwede alam natin at makikita ang yes. अब दूसरी बताइए कि कहाँ तक कितने जगहों पर देखा है डिजिटल डिवाइसेस की वजह से क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह में देखा था right उसे है पार्ट टेस्ट हो गई हमारे को अभी भी कम्युनिकेशन दिए थे हाँ फिर भी नहीं है वहाँ पे कहाँ से रिकॉर्ड ये कह रहा है कि मामा शासन मामा itu ini facilities juga kan योजना का तो पूजा के नशा facilities juga maka sejalan atau dangerous ya cia nanya cik nisbat pilih cik musila juara
Kaya parang kaya nakapil last. Internet na online as हाथ ऊपर कर लीजिए पहले माइक दीजिए पीछे 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 वाले बोलने के लिए हाँ बोलो बोलो मैं अभी भी मार रहा हूँ ये लड़कियां बहुत है पीएलबी का मान क्या है एक वो इनका खुद ये एप्लीकेशन में इनका खुद फार्म में बताने के हाँ let me now go on to the PLVs who like to speak something PLVs to the mic उससे बात हमारे कौन PLVs है जिसमें से 30 PLVs women हैं 4 PLVs आप देखिए बहुत सारे जिन्होंने कहा कि पीएलवीज आए नहीं है हमारे में तो क्या कारण है क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसे क्या हुआ है सर मैं पैरालीगल वॉलंटियर हूँ तो हम चाहते हैं सर पता नहीं कौन बोल रहे हैं सभी लोग बोल रहे हैं जिसके पास हम जाते हैं वो तो हमें नहीं पता ये क्यों बोल रहे हैं बट हम जितना हो सके अपने से पूरा एफर्ट करते हैं एक तो अपने एरिया में तो जाते हैं मतलब मेरा ये कटाने से लेके लंच तक मैंने बोला भी था अपने वकील साहब से कि हम 170 किलोमीटर इतना दूर एरिया तक नहीं जा पाते हैं तो सिर्फ हम 2 यूनिट पहले कर नीचे है पूरा साउथ ईस्ट तो वो हम कितने विलेजेस है आपके उस एरिया खानवा में टोटल 15 छोटे-छोटे मिला के 15-20 है सर फिर हम दोनों पूरा कवर नहीं कर पाते सिर्फ हम सरपंच लोगों को जो पास-पास के हैं हम महीने में एक बार जाते हैं और जो पास-पास के वहाँ पे तो मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम वहीं पे करते हैं सर 20 किलोमीटर तक हम कवर कर पाते हैं सर फिर दूर-दूर तक हम जा भी नहीं पाते क्योंकि हमें टीए भी नहीं मिलता है सर वहाँ पे सर्विस भी नहीं होता है बसेस नहीं चलती है वहाँ पे तो इसलिए हम कवर नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टीए भी नहीं दिया जाता है हम 2-2 3-3 हज़ार देके कैसे अफोर्ड करेंगे सर पूरा बुक करके जाना टैक्सी वगैरह बनाना फिर ये नहीं होता है सर मुझसे सिर्फ हम सरपंच लोगों से मतलब कॉन्टेक्ट करके जितना भी स्कीम्स होते हैं और पेंशन विडो पेंशन लेबर जो साइट पे जाके हम करते हैं सर पता नहीं उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिले वो तो हमें भी नहीं पता देखिए हम चाहते हैं कि सर मतलब तीन गाँव में एटलीस्ट सर तीन गाँव एक मिनट सेकंड शी सर वही सिर्फ में वो डालू के पोस्ट बात करते हैं मुझे बोल रही हूँ वही मैं बोल रही हूँ मटाली से लेके गानपुर तक आप किसी से भी पूछ लो हाँ सर फिर मैंने भी रिक्वेस्ट किया था वही सर से कि हम गानपुर सिर्फ को तब ही पूछ पाते हैं वहाँ पे दूसरे 2-3 लोग अपॉइंट करें तीन गाँव आपसे हाँ जी सर पैरालीगल वॉलंटियर्स जी सर वो सब अपना एक डेटा बना के देंगे आपके यहाँ कितने विलेजेस में नहीं सर कितना आपका एरिया है नहीं सर और किस किस विलेज में आप पहुंच सकते हैं किस किस विलेज में आप ठीक है सर उस हिसाब से फिर आप उसकी हिम्मत वर्कआउट करेंगे ताकि और पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट कर सकें वही सर थैंक यू सर अगर अपॉइंट कर तो सकते देखिए हैं वो तो फिर आप ताकि वो शेयर कर सकें अच्छा आप मेरे को एक और चीज बताइए आपको कुछ दिक्कत लगा डिजिटल डिवाइसेस की वजह से कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हमारे साइड में तो नेटवर्क की इश्यूज नहीं है सर नहीं नेटवर्क का इशू एक चीज जी है सर उसको नेटवर्क तो हो सकता है पर मैं अगर फोन चलाना नहीं जानता तो फिर कैसे कनेक्ट होगा उसका तो आपको उसका और लोगों वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर वगैरह भी कई बार क्या होता है आधार का एप्लीकेशन आपको कोई स्कीम का है कैश ट्रांसफर डायरेक्ट ट्रांसफर है प्रधानमंत्री योजना है घरों के बारे में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के बारे में है बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट का आपका एलपीजी का स्कीम है बीसी स्कीम है आपको डिसेबल्ड लोगों के लिए स्कीम है आपके जो विमेन है उनके लिए स्कीम है और एक और चीज मेरे को बताइए कि क्या यहाँ पर डिस्प्यूट उसका भी देखो जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लेके गए कि यहाँ पे विमेन के जो
वो मेंटेनेंस वगैरह आने उसका कोई दिक्कत तो नहीं लगा पेमेंट वगैरह में सर ये पेंस जैसे हम कॉलेज पेंशन और वीडियो पेंशन वगैरह डिसेबल पेंशन तो बनाते हैं तो उनमें बहुत सारा मतलब 2 साल अभी मेरे 30 केसेस है सर पेंडिंग है अभी सोशल ऑफिस में मैंने उन ऑफिसर से कांटेक्ट भी किया था कि मतलब वो 2 साल हो गए सर तकरीबन आप जो केस साल से ज्यादा हो जाता है फिर आप लीगल सर्विसेज कम्युनिटी को या आपके जो ऊपर वाले हैं उनको इन्फॉर्म करके उनके नहीं yang pilih apa usaha nama sesuatu usaha dengan pilih ini masa pilih sama देखिए आप में से काफी सारे जने मेरे को लग रहा है बोलना चाहते हैं आप वेट करिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के यहाँ पे हैं वो आपसे इंटरैक्ट करेंगे मेरे हमारे जाने के बाद वो आपसे हर एक जगह से इंटरैक्ट करके आपकी बात सुनेंगे। मेरा जो एम ये था देखिए मैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है सारे देश की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है मैं जा जाके वहां से यहाँ पे अकेले करना है वो मेरा है मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता मेरा एम ये है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वो सॉल्व करे दूसरा दो चीजें हैं हम लोग स्कीम्स को इन्फोर्समेंट में involve हैं। हम लोग स्कीम्स फॉर्मुलेट जो हमने करी है वो लिमिटेड नंबर मतलब हमारा खाना है उसके अंदर हम एक्ट कर सकते हैं हम ये नहीं करेक्ट कर सकते कि यहाँ पे फुलसेल होना चाहिए यहाँ पे ये होना चाहिए वो नहीं तो हम अपने डायरी के अंदर काम करेंगे और डायरी के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स जैसे हम लोगों ने कहा आपने बताया कि कुछ जगह नहीं आ रहे बहुत सारी स्कीम्स हैं उस स्कीम्स को आपके पास पहुंचाना जरूरी है और व्यक्ति जितने भी आप लोगों ने बोला है उससे क्वाइट ईजी बड़ी क्लियर है आप बड़े जागरूक ये बड़ी खुशी की बात आप जागरूक है और अपनी राइट्स के लिए आप मानते हैं ग्राहक मानते वो ही अच्छा है ये 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 चीज और ऐसे आप खुले होके बोल सकते हैं ये आपका एडवांटेज है इसमें आप कोशिश कर रहे हैं ये अनुसूची अभी पढ़ने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज होती है वो आप सबसे इंटरैक्ट होती है so now I'd like to come to the panel lawyers and the legal defense counsel as far as you are concerned we have 11 panel lawyers 6 are men 5 are women and we have 2 LACs, Liberty agencies, and business agencies. Are any agencies present in the court where they are sorry, what you know, you are present. Okay. Um, were you earlier, were you earlier panel lawyers? And were you earlier panel lawyers? No, sir. You're not earlier. No, sir. So you are dealing with sessions cases or you are dealing with straight? Both are some dealing with session cases. What is I found the total pendency per lawyer is not very high. Is that correct? Yes, sir. I then how do you spend the rest of the time? So I told you that I will see you usually work with you. When you are working best. हम लोग ये डेटा के सोशल डेवलपमेंट में काम जो है वो ये भी साथ जाते हैं उसको क्लियर कैसे करना होगा इस मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है और उसके अंदर जैसे इन्होंने पीएनबी से कुछ कहा कि लोगों से एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं हुई है उसके अंदर आई थिंक समटाइम्स लीगल नोटिस कैन वर्क
लीगल नोटिस टू द कंसर्न अथॉरिटी कैन वर्क। तो उसके ऊपर अगर देखिए सर्विस लीगल अथॉरिटी टू यू कैन सेंड द लीगल नोटिसेस दैट विल हेल्प बिकॉज़ वी हैव फुली optimally utilize your services. मैं देख रहा था कि मजिस्ट्रेट के यहाँ से काफी अच्छा काम हो रहा। पर सेशन केसेस में ज्यादा डिसीजन नहीं हुआ। वो क्यों? Music video area area है ये बस ऑपरेट की वजह से एक तो संस्कार किसी जगह यहाँ पे तो लेकिन जैसे कि वहाँ से लोग एकदम पहुँच नहीं पाते हैं और यहाँ पे फायर बहुत कम लेवल पे हो जाता है जिसकी वजह से फायर रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि एनटीसी की नए नए जो एस्टैब्लिश हुए हैं एनटीसी में यहाँ पे लोग उनके क्रिमिनल केसेस को देखें तो लिहाजा अभी इस वक्त में अगर आप रेडियो स्टेशन पे जाके या टीवीज के साथ जाके हम इस इस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं कि देख ठीक है ये रिलीज है तो आपके क्रिमिनल केसेस देखने कितनी तकलीफ कैसे अच्छा, अब आपकी अब सर्विसेज जो है for legal advice to PLEs and to citizens of the country international have to cooperate in them because we are paying a substantial amount and we want to utilize your services to the best. वो और नहीं वो ऑल इंडिया फिगर है वो हम देते हैं हमें ऑल इंडिया डिसीजन लेना पड़ेगा वो हमारे पास इशू आपको कितना मिल रहा है और 45,000 यूनिवर्सिटी इसमें हमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जाने के लिए जो होता है यूनिवर्सिटी को यहाँ से मतलब हमें संस्कार जाना होता है approximately 100 kilometers away from this तो इसमें हमें एक गाड़ी की जरूरत होता है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे पूरी चीजें सारी चीजें देखने में बहुत दिक्कत होता है तो यहाँ पे एक मिनट जैसे पीएमबी ने कहा पीएमबी से ज्ञान सही कि यहाँ पे हमें एक विलेज और दूसरा विलेज के बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का ये आगे बढ़ी थी वहाँ से जाने के लिए कोई गाड़ी का इंतजाम या आपको कहीं में ये थोड़ा भी और किसी तरह की व्यवसाय है इनको दीजिए district food and member of Ego Legal Committee, representing District Kargil also. We have four fellow District Kargil. Two ladies, she's there, of course. I mean, all the can doing this the most of the domestic violence cases. Even in the legal we are successfully connecting the biggest case, most of the complaints, ladies who are coming to filing complaint domestic violence and section 25 cases. We more than 20 cases are pending through this legal this pending all of this law. More than I don't know like this in a deal and a section 484 the was successfully the judgment was passed before the relief. And most of the characteristic of those places less population that need to be similar states to require a district plan. Because the villages are separated villages, there are distance, lot of distance there. We are not able to reach different villages. There is right here in Chicken, where we are not a single this surveillance scheme was conducted in village Kuksu. In Sapi and other villages, we are hopefully the direction we are watching. We are conducting this surveillance. This is one question to all of ASBs, knowledge, like do you think mobile relate lines can be helpful? Yes, because extremely helpful for the village too. Because if you see them while this material material
बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी आप सबका आपने आपने हमसे बात करी पॉइंट किया मैंने सबने नोटिस किया है मैं बहुत सारी आपको से लर्निंग नहीं जाना मैंने कुछ आपको जो आपने कहा है इसको Thank you so much, Lordship, for having such an invaluable interaction session. Now I request Principal District Administrations at Kargil, Mr. Manashwari Rehman, to come to the dais and present vote of thanks. Okay. My Lord, Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India, Executive Chairman, National Legal Service Authority. My Lord, Honorable Mr. Justice Tashi Rabastan, Judge High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Executive Chairman, J&K Legal Service Authority. Dr. Pawandev Kotwal, Advisor to Honorable Lieutenant Governor, Duty of Ladakh. Mr. Shrikant Balasaheb, Deputy Commissioner, Kargil, and other officers and officials of district administration. Mr. Rajendra Sapru, Registrar Rules, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Mr. Amit Gupta, Member Secretary, Jammu and Kashmir Legal Service Authority. Ms. Subelza Sangmo, Member Secretary, Ladakh Legal Service Authority. Colonel K.K. Venkataraman, Deputy Commander, Kargil Brigade. Mr. Abdul Bari, Joint Registrar, Judicial, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Mr. Mujibur Rahman, in charge SP Kargil, and other officers of police administration. Mr. Shafiq Ishtaq Loan, Munsif Kargil, President and members of District Bar Association Kargil, participants, ladies and gentlemen, it's my great honor and privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion. Article 39A of the Constitution of India provides that state shall secure that the operation of legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. This constitutional mandate is fulfilled by the provisions of Legal Services Authorities Act 1987, which governs the schemes of legal services authorities, which governs the schemes of legal services through National Legal Service Authority, NALSA. The concept of free legal aid has not remained confined to providing free legal services in civil and criminal matters to those poor and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer. However, over the years, the concept has expanded in its horizon by including within its fold the schemes for awareness of the right of free legal aid. Today's program is the example of one such scheme, and this day will be remembered as a special day in the annals of Ladakh Legal Service Authority and the District Legal Service Authority, Kargil, with the august presence of my Lord, Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Executive Chairman, National Legal Service Authority. Today we have had an enlightening and enriching experience, and it is my duty to acknowledge the contributions of all those who made this event possible. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest,
Honorable Mr. Justice Sanjeev Khanna, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Service Authority, for gracing us with His Lordship's esteemed presence. Sir, your insightful address has undoubtedly deepened our understanding of the crucial role that legal awareness plays in empowering our community. Thank you, Lordship, for sharing your valuable time and knowledge with us. I am also immensely grateful to my Lord, Honorable Mr. Justice Tashi Robertson, Judge High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Executive Chairman, J&K Legal Service Authority. His Lordship has been at the forefront in the legal aid and legal awareness movement in the UTs of J&K and Ladakh for quite some time now. His Lordship's commitment to the cause of equitable justice has left indelible footprints in both the UTs. I am also grateful to Dr. Pawan Dev Kotwal, advisor to Honorable the Lieutenant Governor, UT of Ladakh, who has traveled all the way from Leh to participate in this program and also delivered welcome address here today. Sir, your presence over here today has really inspired us all. A special thanks to district administration led by dynamic deputy commissioner, without whose support it would have been next to impossible to organize this program. I would also like to extend my appreciation to the National Legal Service Authority for their unwavering support and guidance. The commitment of NALSA to providing accessible legal aid and spreading legal awareness is making a significant impact in bridging the justice gap in our society. A word of appreciation to organizing committee, members of DALSA Kargil, and court staff whose relentless efforts behind the scenes ensured the smooth execution of this program. Your dedication and hard work are the backbone of our success today. I also extend my thanks to the District Information Officer Kargil and his team of officials and members of print and electronic media who have covered the program, and I hope that the event gets a full and wide coverage in the media. Last but not least, I want to thank all the participants and attendees who took the time to be part of this event. Your enthusiasm and engagement are what make these programs meaningful and impactful. It's your willingness to learn and share this knowledge that helps us build a stronger and more informed community. In conclusion, today's program has been a testament to the power of collaboration and the importance of legal awareness. Let us carry forward the knowledge we have gained and work together towards a more just and equitable society. Thank you all once again for being here and making this event a grand success. Thank you. Thank you so much, sir. I now request all the Lambadars, social welfare workers, PLBs, LLDCs, and panel lawyers to remain seated so that they can have an interaction and discuss their issues with the officers of District Legal Services Authority, Kargil, and the Ladakh Legal Services Authority. With permission, may I continue? Yes, sorry. Memang sama juga sebenarnya dari sekaya. Bisa definisi semua kalau cara beri apa yang memang dia juga mengasyikkan peningkatan segi peningkatan suasana dan segi sebagai konsep pemajin bola ni. Jadi akan ada event juga mereka semua akan diskusi. Dia jadi sudah juga tidak jual ini. Itu saja. Group photograph. Yes, sir. Please tell me. Tell them to please. So better here. No audience to sit.